in Delhi. Yeah. Haji. Can you see the screen now? Yes, sir. All right. So we did some concepts so far, and I'll just pick these up and okay. All right. So magnetic force. Let's do some numericals on magnetic force on the current carrying conductor. Simple ones, not very. Okay. First, I will tell you the situation. So there is a magnetic field which exists, which is 2i plus 3j plus 5k. Current is in j direction, and I is equal to j. You have to find the force on this. On this conductor. So what is the formula or the concept? सर क्वेश्चन दिखा दीजिए. हाँ. Here a question. I'm sharing the screen. Yes, sir.
Just give me 1 second. I think कुछ something wrong. So what was the formula? Just discuss with me. मैं कर लेता हूँ. Force was equal to I L cross B, Hmm. right? So this was your current. So, and this is L and B. So the current is along J Okay. direction wise. So current is in J direction. So I have written it as J amperes. Okay, so which means the direction, the length on which it is lying is J cross B. 2I plus 3J plus 5K. And you can see the magnitude Hmm. of length. So this is I current, length, and sine of angle between them. Or I can do a direct vector multiplication. Hmm. So J cross I, and the current is J amperes. So if you see the magnitude of current, it is 1 only. Correct. So I J K, J cross I Hmm. minus K, J cross J, which means J sine 0, J cross K, which is I. Answer. ठीक है. Okay, nothing great about it. Hmm. Let me see if there are. We had practiced the moving charge, Hmm. solenoid. No question in this. Let me use some more situations. Current carrying wire. Okay. Current carrying wire. Okay.
Okay, so you have a triangle. Okay, let's see, you have a triangle, and the magnetic field is this. So the triangle wires are going to carry the okay, and each side is 10 centimeter, or let's say is A centimeters, and it carries a current of 5 amperes. Okay. All right. Now what you've done is you've given it B is equal to 3 Tesla. You have to find the force on each of the 3 sides. Correct. So you can write it as A, B, and C. This is equilateral triangle, 60-degree each. So let's consider the section number BC. Section BC. So एक करंट आउटवर्ड है या इनवर्ड है, क्रॉस? Inward. ठीक है, तो you know the direction of the magnetic field is 3D के अंदर अगर हम देखें तो your magnetic field is in this direction and your current is in this direction. तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन गया, हाँ. which is this, and this is your L, this is your B. So if you move from L to B, what direction will you go? On a corkscrew, upwards? Upwards. So force on this will be I L cross B, right? So current is 5 amperes. Length कुछ भी हो, let's say it's A. So A cross B. So A is in I and B is in, for example, let's say कि हमने use जो system करा है, this is Y axis, Y dash. Okay. Cross 3 Tesla. This is A in I direction. 3 Tesla is in minus J. So 5 A I minus 3 T J. So sorry, I cross J लेना था ना मैं. Just give me 1 second. I think instead of, we should have been multiplying these. I cross J. Sorry, मैंने उसको bracket को गलती से. ठीक है. Got it? So you have I. Oh यार uncle. I, J and K. So I J will give you K. Correct. ये माइनस साइन है, वो इसका साइन आ गया ये वाला, एंड I और J का वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, which gives you K. I
Newton. Now let's look at this section number AB. Okay, and if you see AB is now look at the wire AB. What is the direction in which it is lying? If this is an XY plane, inward है ये, so ये vertically मतलब खड़ा हुआ है ये, right? हमारा B तो ऐसे है ना, तो maybe the situation is like this. Okay. The magnetic field is going inside यहाँ पे, right? So ये हमारा जो length है ये वाला, it is 60 degrees. This is also 60 degrees and 60 degrees. So we have to find the force, and we can say force is given by, so if this is your length, I can write this I doesn't change, L cross B is equal to I L cross B. So we can split this into two parts vectorially. One is this part, the other is this. Correct. Length, right? So one part is downward. This is downward. So what is if this is A and this is A by 2, how much is this? A square minus A square by 4. Root 3 by 2 A. So if I have to write length, I will write it as root 3 by 2 J downward and minus A by 2 I. Multiply by cross product of B. B is still where it is. It was Yes, sir. minus 3 J Tesla. So this is equal to current 5 J cross J 0 and I cross J K, and minus becomes plus. So 3A by 2 K. Okay. Pure vector multiplication, nothing great. Yes, Standard, and ज़्यादा मतलब did not give it too much thought also. नहीं. Right? Okay. So whenever you get these questions, you're just worried about if you just want to, इसमें तो डायरेक्शन भी आ जाएगी ना K. हाँ, आ जाएगी. तो वेक्टर ही आ गया ना पूरा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पता चल गए. Yes, sir. Right? Sometimes what happens is if they ask you what is a magnitude, you can say magnitude अगर पूछ रहे हो तो then FAB is equal to I magnitude of length, magnitude of B, and the sine of angle between them. That's another way. Okay. Okay, sorry, I think have we multiplied it correctly? I think we have. So we had to multiply 3 by 2, ठीक है. So I is again 5 amperes. Length is how much? A. This length. And B is 3 Tesla. What is the angle between them? Root 3 by 2. कितना आ गया आंसर? I ले लिया डायरेक्ट. अच्छा, this is not the 60 is not the angle between them. Sorry, 60 is not the angle between the. समझ नहीं आ रहा था. 60 the angle is 90 degrees. हाँ, yes sir. अब ठीक है.
है ना 90, so साइन ऑफ 90 इज 1. हम्म, अब तुम डायरेक्ट ले रहे हैं ना, ये L है और यस सर। L इज इनवर्ट, तो L के साथ तो 90 डिग्री बना रहा है ना, एक्सिस ही अलग है, हम्म, अंदर जा रहा है ना ये. So, इन दोनों करेक्ट। के बीच में एंगल 90 डिग्री है. दिस इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस थिंग इज हम्म, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यू हैव दिस. प्लेन तो ऐसे है, yes, sir। परपेंडिकुलर, समझ आ गया? ये हाँ, प्लेन है और ये परपेंडिकुलर है. करेक्ट। मैच हो गया ना आंसर, 1/2, 15/2. हम्म, बट डायरेक्शन नहीं आई इससे, हाँ वो रहेगा। है ना. बट यू कैन ऑल्सो डू इट दिस वे, साइन जो रूल होता है A×V का, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर निकालने को बोलते हैं तो ठीक है, लो मैग्नीट्यूड. ठीक है। बट अगर डायरेक्शन भी बोलते हैं तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट ही निकालो. मतलब फिर देन यू करना हैव टू पड़ेगा। थिंक इन टर्म्स ऑफ कि लेंथ के वेक्टर्स कैसे बनेंगे. यस सर। ठीक है, लेट्स डू समथिंग एल्स. सो यू हैव टू ओके. अच्छा, इसमें यार we don't need to do friction. Okay, let me open the whiteboard and start pasting questions so that you can also try it out. हम्म, ठीक है, you have seen a glimpse, right, कि just opening the whiteboard. एक दो करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. ठीक है। Most of the questions are like this only. I mean, there is nothing. I'm just pasting a question. We'll do by concept. इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिक्स के साथ इन्वॉल्व कर दिए हैं. मतलब वेट होता है ना जो वायर का, यस सर। वो भी साथ में लिख दिया है. अच्छा। Okay, so we'll just start with very simple ones so that you can use it with your. All right, I'm just pasting.
ठीक है, उसने वाई डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया क्या? यस, लेट मी जस्ट डू दिस। आई एम हियर। अच्छा, ओके। I think first thing you should do is draw a wire along y-axis. ठीक है। Magnetic field is in the x-axis, हम्म, and it is a constant uniform magnetic field. So magnetic field is like this. यस सर। ठीक है, ठीक है। आगे पर यूनिट लेंथ, मतलब लेंथ इज 1 मीटर।
फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ कर दो. हाँ बट फर्स्ट राइट द डायरेक्शन ऑफ. पहले तो फॉर्मूला लिखो ना यार. फर्स्ट यू हैव टू राइट. दिस इज टू बी फाउंड आउट, राइट. ये तो टू फाइंड है ना. बट बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट द क्वेश्चन दिस इज योर एम. फाइंड व्हाट. ये तो आपका बेसिक है. विच मीन्स यू नीड अ लेंथ वेक्टर and you need a b vector. So your length is along what? ये है ना लेंथ आपकी. हाँ तो आप वन दी हुई है आपको पर यूनिट बेसिस पे निकालनी है. तो ही सेज और आपका बी क्या है? आई कितना दिया हुआ है? ठीक है. So if you put length as 1, then you're getting force per unit length only. हम्म Any doubts in your mind कि समझ नहीं आ रहा? You know there are two vectors L and B. Both I have written in vector notation. And there, what is the angle between them? 90 degree. हम्म Because one is in y, the other is in x. वैसे भी वेक्टर में लिख लिया. अब वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लो ये वाला. पुट दिस इन दिस. फाइनल गोल तो यही है ना. वो क्या कर रहे योर थिंकिंग. एक ठीक है. पार्ट हो गया. नेक्स्ट. नेक्स्ट. देखो जब दूसरे को करते हुए देखते हो और खुद करना पड़ता है फर्क आ जाता हाँ होता है. है ना. नेक्स्ट.
हो गया सर। लेट अस सी। ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन तो आई नहीं। Thirty degrees from the x-axis towards the y-axis, which means now this wire is kept like this. जेड एक्सिस हो गया। If the magnetic field is 30 degree from the x-axis towards the y-axis, okay? So a magnetic field is no longer here. Okay, so the magnetic field has changed its direction, यस सर। but it is a bit inclined from x-axis towards the y-axis, 30 degree. करेक्ट। मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड आपका। थर्टी। नाउ फाइंड द वेक्टर, डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। वेक्टोरली लिखो इसको, ये तो आपने लिखा है वेक्टर यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड, या तो इसको ऐसे लिखो, बट डायरेक्शन ठीक भी है। तो बतानी है ना अभी। सो आपका जो एक्सिस है, अगर ये एक्स एंड वाई है, अर्लियर योर मैग्नेटिक फील्ड वाज हियर, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। जेड एक्सिस हो गया। नॉट जेड एक्सिस, है तो एक्स और वाई में ही, बट 30 डिग्री एंगल बना रहा है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया उसको। पहले ऐसे था ना यूं, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दिया। अच्छा। और करंट शायद सेम ही रखा है यहाँ पे। करंट से। सो करंट और उसके बीच में जो एंगल है वो ये तो हो गया इन एक्स एक्सिस और इसके बीच में, लेकिन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ओके। दिख रहा है ना डायग्राम में। हाँ। यू हैव टू स्प्लिट योर मैग्नेटिक फील्ड इन टू पार्ट्स, या तो सीधा ऐसे लिख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दो हिस्से बना लो। B is a vector, यस so सर। you know this is B, you know its angle with the x-axis, you can find this and you can find this. So write B in terms of I and J. मतलब एक x axis पे cos 30 और उधर y. So your angle also, this 30 degree is not correct. Magnitude में it should have been this angle. अच्छा। लेंथ और B के बीच में होता है ना एंगल। 30 हम्म। डिग्री तो B का एंगल x एक्सिस के साथ दिया हुआ था, ओके। आपको चाहिए होता है L और B के बीच में। ठीक है। ठीक है, ये भी आपको 60 डिग्री लिखना चाहिए था। हम्म। Anyway, first, so find the vector direction, which means please split B in two parts, x, bx, and by.
0.30 टेस्ला को you have to divide in cos and sin. I think 0.3 टेस्ला था ना ये, so this is 0.3. अच्छा तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया था ना, स्ट्रेट. हम्म So your J cross I J K. So J cross I means minus K. हाँ So minus K. So this is part 1. ठीक है J cross I था ना, हम्म minus K. So you know the direction of the force. Now you're doing the same thing, but now your B is inclined. cos थीटा sin थीटा में टूट गया है तो है? ये तो cos थीटा sin थीटा में टूट गया कहाँ पे? मेरा भी मतलब अभी मैंने कुछ सिर्फ फिगर पे ही लिखा है कि I just split it. You have to split a vector making of 30 degree, and this is your vector. You have to find this and this. ये तो मैंने लिख दिया 0.3 cos थीटा sin थीटा हाँ, right. इसको I और J में लिख लो अब same. So the a vector which is split like this is written like this. हो गया? हम्म जो x वाला कंपोनेंट है उसके साथ I लिख देते हैं, जो y वाला है उसके साथ J हाँ लिख ये तो देते हैं. ठीक है हाँ ये तो पता है तो B लिख दो. Too much struggle for nothing. So this is B. ये कैसा है 0.3 आई? इसमें cos कहाँ पे है? इसकी लंबाई AX की क्या है? 0.3 cos वो cos कहाँ पे है, नजर नहीं आ रहा. Cos 30. Yes. That's your B vector now. हम्म But theta is 30 degree, right? क्योंकि ये with x-axis. यस सर Now put the value 30 degree.
Okay. Now force is equal to L cross B. Where is our L vector? Wider. Correct. लेकिन इस सब डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? जो J के आएगा वेक्टर प्रोडक्ट से, ये I और J है हम्म, और ये J है. So you have you're writing L or J. तो गलत लिख दिया.
हो गया? क्या दिक्कत आ रही है भाई? So I have understood. The problem is ये J क्रॉस I होगा, राइट? So रूल लेकिन इज ये तो मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर प्रोडक्ट है यार ये. Okay, ask me a query. What's your question? Struggling a लेकिन lot. क्योंकि वो सम में है ना वो दोनों। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे एक वाइरस. If it is A cross B plus C, it is A cross B plus A cross C. नहीं ये तो ठीक है, अब ए क्रॉस सी का क्या होगा? You mean J cross J? यस सर। So J cross J is magnitude of J into magnitude of J, sine of 0, both are parallel. तो जे ही 0. रखूँ? जे, ये जे आ गया और इससे के आ गया, तो अब जे और के का क्या होगा? समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन. K है आई ही नहीं क्रॉस इसके जे, अंदर. जे क्रॉस आई माइनस के होता है, हाँ, तो बस माइनस K लिख देंगे. और ए क्रॉस सी का जे होता है। किसका 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 J तो होता है? अच्छा ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। Problem was not physics, problem was maths, vector. तो नेगेटिव जेड एक्सिस आ गया। हाँ, करेक्ट, सही है. हो गया? यस सर। All right. So let's move to the next topic. Okay, so this is the force on a circular wire. ओके। Okay, so if you notice this, this is a circular wire and of loop radius and current, and this is I. It's an XY plane. So maybe it is lying something like this. Let me start another page. Let me go to the ओके। second page. Otherwise, okay, I'm on the next page now. हम्म। You can see, right? यस सर। All right. So this is your circular wire. So maybe it is in the XY plane, which means if you treat this as X and this as Y, then it is on this plane, XY. So Z is perpendicular to it. The other is you can have it on here also, on the here, like on the floor. ओके। Depends on what you select. हम्म। And this then becomes Z. So you can keep it any way you want to, but define your X and Y. Now a constant magnetic field is passing parallel to the Y-axis. So which means if you have kept it in XY like this, then the magnetic field is in Y-axis, ओके। which is J. हम्म। That you have to find the force on the upper half of the loop and the lower half of the loop and the total loop. Okay. So what you do, first take the upper half. ओके। Okay, so if you take the upper half,
So let me redraw the diagram here. Let's say it is a standing X and Y. So let's say it is a situation of X and Y are standing. Since this is not a straight current carrying conductor wire, applying the rule of straight away, which is force is equal to I, L cross B is difficult. Because length is not like a straight direction, right? Yes, sir. Just give me 1 second, please. Okay. Hanji, sorry. Yes, sir. All right. So the situation is that you have this X and Y. So let's keep it on X and Y like this, like he is kept vertical. So this is your Y, this is your X, and the magnetic field is parallel to the loop in this direction. Okay. ठीक है? ठीक है. So this is B. So you can see the B is J, vector J. Okay, direction. Find the magnetic force in the upper half and the lower half. So first of all, see from logic, if you consider a very small part of this length, dl, Okay. then what do? You have to draw tangent to the dl. Because now you can't apply length directly. What you have is a dl available. Yes, sir. And dl may be making some angle with the, for example, I consider this dl, very small length, and dl has its own vector, which may be, and since it's a tangent, it shows up like this, 90 degree. Right. So if this is 90 degree and this is the tangent's
angle vector. So dl can be broken down into a vector with theta with the x-axis. It's a tangent actually, part of the tangent. So dl, which we've taken, is part of the conductor, but this is so small that it is practically treated as a straight line, like a tangent on this for the purpose of Understood. direction. Okay. So since this is a case of small section, so the small force on the small section is written as I, the current, the length is dl, and B, and the angle between B and D. So you can see there is an angle also. This is with the x-axis. The angle of dl with the x-axis is theta, because the tangent on the dl is this. Okay. Right? But you are worried about this angle, which is this. The angle between B and the dl. ठीक है? ठीक है. So dl is making an angle with the x-axis, but आप तो y-axis के साथ देख रहे हो एंगल. हाँ. है ना. सो dl का एंगल ये है थीटा. सो ये कितना हो गया 90. ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा वाई एक्सिस के साथ. 90 माइनस थीटा, राइट. Yes, sir. सो दिस इज द arc you are referring to. Okay, now let's see the angle between. So force will be given by the. इसने देखो, where is the angle he is shown? Okay, so theta is the angle between the magnetic field and the segment of the wire. अच्छा, इसने डायरेक्टली ले लिया है. ठीक है. सो ये थीटा लिया है इसने. सो दिस इज 90 माइनस थीटा. ठीक है. उल्टा ले लो, एक ही बात है. हाँ, वो तो ठीक है. एक ही बात है, राइट. तो इसने अपना फॉर्मूला लगा लिया, ये वाला BIL sin थीटा, वो वेक्टर प्रोडक्ट से वेक्टर निकाल लिया. And then he says that this particular arc, which is part of the circle, overall circle, subtends an angle of d theta at the center also. And this is the radius r. So this is r d theta, arc. Okay. All right. So the total force. So now what he has done is he has converted everything into. So convert dl in this and substitute in the formulas of df. So arc length is r d theta, and this is the arc length. Put it in the formula of df. So dl substituted in df gives you this. ठीक है? ठीक है. So now you have to find the total force on the segment. So what you do is you take upper half 0 to pi. So you integrate this, you get answer as 2IB PR. This is only on the upper half. ठीक है. ठीक है, let me just rub this off. Let me just rub this off. So this is what he has done technically. He has picked up the so you know the this is the direction. Pick up any small part
pick up the any small part. Okay, and the angle between the magnetic field and the section is theta. So this is almost a straight line. So it is going like this. This is your magnetic field. So this is how much. And this is d theta. Correct. So length of the arc is r d theta. And the formula of force is dF is equal to IB sine theta dl. Now integrate it 0 to pi. Answer is 2IBR. So the upper part of this faces a force, which is 2IBR. And just for your there will be a corresponding point here also. So I'm now looking at the lower part. The lower part will be integrated in identical manner, but from pi to 2 pi. So this is 0 to 2 pi, but the lower part is pi to 2 pi. Okay. So if it is I'm just copying something. If you do the integration of pi to 2 pi or pi to 0, okay, you will get an answer. He has done pi to 0, reverse, which means he has taken this semicircle from here. This is pi, this is 0. So he is integrated on negative side. I was integrating from pi to 2 pi in this direction. Yes, sir. One and the same thing. He gets an answer of minus 2 IBR. So which means corresponding to the upper part, the lower part is having a reverse direction. Okay. So the net force on the total loop is ठीक है? So the net force on a circular current carrying wire, which is where the magnetic field is parallel to the one of the axis, ये जो y axis में जा रहा था, right? Straight xy plane में. The answer is 0. Okay. But it's a situation which needs attention, because if you have a body which experiences an upper force, which is some force, whatever, can direction, and then it has a lower part which experiences a negative force. It is something like very similar to this. Torque. Although the net force is 0, this is F, and this is also F in the opposite direction. The net force on the system is 0. Yes, sir. But this force is having the power of rotating. Rotational power is there. So this loop starts rotating. Okay. A circular loop will start rotating.
Okay, let me change this question for you a bit so that you can understand in a better manner. Hmm. So magnetic force is zero, but torque exists. Torque is Correct. force into force arm. But we'll derive that also. Okay, let me just see if we have a question on this where there is a bit different direction. Okay. Right. So let's say we have a semicircular wire. Okay, it's not a full circle, so it's a half a circle. Hmm. What happens in the case of a half a circle is the question. Okay, and so this is a semicircle, and the current in it is flowing like this. The magnetic field is again B is equal to 0.1 Tesla. Okay, and so it is known you can see the magnetic field this time is perpendicular to the loop, not parallel. Correct. Earlier we had put it parallel Hmm. along the y-axis, Yes, sir. right? So current in the loop is 2 amperes. Hmm. Okay, you have to find the direction of the magnitude in and the radius is given to be 1 meter. Sorry, find the force being experienced by the semicircle.
The current direction is given to you. Theta is always the angle between the B and L. परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. हम्म. लेंथ और बी परपेंडिकुलर है क्योंकि वो अंदर ही परपेंडिकुलर टू द वो हो गया प्लेन. पिछले में हमने पैरेलल करा था, इफ यू रिमेंबर. दिस मैग्नेटिक फील्ड वाज अलोंग वाई एक्सिस. करेक्ट. इसके अंदर अंदर डाल दिया, अंदर. हम्म. 90. करेक्ट. थीटा 90 दिया हुआ है. हम्म. इजी हो गया ना थोड़ा काम. यस सर. अदरवाइज इट वुड हैव बीन हार्श. एक सेकेंड. So take theta is equal to 90 straight away. हम्म. हाँ जी, हो गया. ये लेंथ है ना. अच्छा ये लेंथ है. ये क्या लिखा हुआ है आर. ये फॉर्मूला में दिया ना, कौन से फॉर्मूले में. जो आपने ऊपर पेस्ट ये तो करा है. तब निकाला था जब पैरेलल था. ये तो परपेंडिकुलर है. When the magnetic field was parallel to the circular coil. इसमें तो perpendicular है. Why are you using the same formula? ये 2 कहाँ से आ गया. There is no 2 in this. ये तो perpendicular का केस है.
Should I help you? ऐसा Okay. So देखो जब perpendicular हो गया तो theta is 90, right? वो तो ठीक है। So every element is at 90 degree with the magnetic field. हम्म Even if you divide it into small parts, what will happen? Every element is having the same direction of force. ठीक है। What is the total length available to you? करंट कितना दिया हुआ है? आंसर देखो फोर्स आ फॉर्मूले गया। की दिक्कत हो रही थी। फॉर्मूले की लेंथ लेंथ पे फोकस होना चाहिए ना। देखो बी वॉज फिक्स्ड मेरे को ये समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बिकॉज फॉर्मूला की परवाह नहीं करनी होती, सिचुएशन समझनी होती है। व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन एल एंड बी, वो फोकस होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मतलब? दैट वाज जस्ट अ डेरिवेशन टू टेल यू। आई जस्ट स्लाइटली चेंज द क्वेश्चन and made it parallel. In parallel, the force on each element, small element is different because the direction of B is different. हम्म इसमें देख लो, इसमें व्हाट इज द डिफरेंस? कोई फर्क नहीं है। इसके अंदर नो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट लिया और देखो फोर्स क्या लग रही है उसके ऊपर। हम्म टोटल लेंथ पाई आर थी। सो प्रॉब्लम इज नॉट फॉर्मूला, प्रॉब्लम इज योर थिंकिंग। थिंक फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ बी एल क्रॉस बी इज द लेंथ. What is the angle between the length and B? In this case, if you notice, the any length you take, any length, the B is perpendicular to it. ओके। Got it? हम्म That is how you need to think about it. इस पे क्या अंडरस्टूड। फोर्स लगेगी इस वाले पे? If I ask you, किस पे? ये वाले, ये भी तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। हम्म इस पे लगेगी 1 इंटू, सेम ही लगेगी। इसकी लेंथ सेम है। लेंथ तो 2 मीटर ही है ना। ओके, 2 मीटर है, ठीक है, अग्रीड। वो पाई में आ रही है ना लेंथ। दिस इज पाई आर। अच्छा ये हाँ ठीक है, तो इसमें तो वन सर्कम इंटू टू हो जाएगा। डायरेक्शन स्ट्रेट, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर।
डायरेक्शन इसकी एक्स एक्सिस ही होगी। हम्म ओके, वेट, सर समझ गया, एक सेकंड सर। स्ट्रेट सेगमेंट का तो बहुत आराम से आ गया ना, लेंथ मालूम है 2r, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड। The length is along x-axis and the magnetic field is inwards. तो inwards का मतलब प्लस i प्लस j ले लो, तो अपवर्ड हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो माइनस जेड एक्सिस हो गया। हाँ मतलब ये मालूम है ना, ये करंट यू है और करंट क्यों है? हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। इनवर्ड्स। सो लेंथ ऐसी है, हाँ। लेंथ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, कॉक स्क्रू रूल, अपवर्ड्स हो गया ना, द बॉटल विल ओपन, लेंथ टू बी जाओगे ना, हाँ, यस सर, सो ठीक दिस है, विल गेट करेक्ट है। पुल्ड अप। हाँ, ठीक है। ओके, okay, now look at the circular loop. Look at the circular loop now. Okay, if you look into the circular loop, take any dl on this ओके। at an angle theta. हम्म। ठीक है, ठीक है। so your force is given by dl cross b into I. Right? If you consider any small part on this, there is a corresponding small part in the other part also here, which is symmetrical. ओके। Okay, this is dl. So if you consider this to be dl and this is another dl, if you resolve this dl, you will get this. If you resolve this dl, you will get this. So which means the dl component, which is this component, yeah, and both of them cancel each other. But this component gets added. ठीक है। So only one component gets added in dl. हम्म। The y components cancel out. ओके। So when you take this dl and you try to integrate it, you're actually integrating dl cos theta.
Sine thetas get cancelled because if you divide dl into two parts, it has one part dli, the other is dlj. J. J gets cancelled. Hmm. If you integrate this, what you will get is this. Let me show you, and that is why I just kept quiet to tell you something which is you may have to retain. If Okay. you do the calculation, this will dispel all everything you have in your mind. Okay, let me just share it with you. Hopefully this will bring in a lot of clarity in your mind how to view the problem. Okay, let me just share it with you. Look at this. So with the current in the wire as indicated, with the magnetic field direction in z axis, हमारी भी z में ही है. The force is the radial direction, and we can integrate the elements. So force is in radial direction. It has to be perpendicular to both r d theta, and so it is coming out. The force is in radial direction Okay, for sir. this particular part. Correspondingly, there is another part here. The force is radial for that also, but this force has two parts. You can see this part is cancelled, and only the upward force part is getting added. Yes, sir. Right? So the force is radial when we can integrate this from theta is equal to 0 to pi, and the force acting on the semicircular portion of the loop for the express the net force acting on the loop. So if you write this semicircular part, straight wire is this IL cross B. Yes, sir. Right? And you can just write it as df is equal to, now notice the other part, which is your semiconductor loop. In a semiconductor loop, dl cross B, okay, which is equal to dl is equal to r d theta, and the force is df cos theta, the radial force. Okay. And you know which x-axis it is getting cancelled, this is getting added. Okay. तो अब हम जो सर्कुलर पार्ट है सेमी सर्कल उस पे देख रहे हैं. So this will remove the doubts in your mind. So we're finding the semicircular part. I'm integrating the components of the forces. So previously what I did was I just told you that the force is acting like this. Right? And sorry, the force is this. It is acting in on the same direction, whereas only the magnetic field tha wo to andar. Yes, sir. This was a magnetic field. This is your section. Right? So if your dl is like this, dl, and your magnetic field is inward, if you do a L cross B, what you will find is that the force is towards the radius on each component. So ये जो छोटे छोटे component में ले रहा था, the force is radial force. Okay. On each one of them, because radius is the only thing which is perpendicular to the tangent. And obviously z axis के तो parallel होगा ना ये. हाँ होगा. ये वाली चीज जो है ये z axis के तो perpendicular होगी. Correct. और टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होगी. तो 3D सिस्टम अगर आप देखो, एक ये है, एक ये है और एक ये है. ठीक है? ठीक है. Let me just go back. So once you find out that the radial force is what exists, radial force होती है मतलब.
That's a point I'm trying to make. It's a radial force in this case when the magnetic field is perpendicular to the loop. But that radial force has two components, F cos theta and sin theta. So cos theta gets cancelled on both the sides by symmetry. And only sin theta is left. So let's integrate it. Okay. कितना आया देखो 2RIB और वो वाला आया -2RIB L cross B. Okay. However, ये तब पॉसिबल होता है जब करंट एक लूप में क्लोज्ड लूप में फ्लो करता है ऐसे. ये क्लोज लूप है, देखो करंट ऐसे आया और बाहर ऐसे चला गया, तो इट्स अ क्लोज लूप, राइट? Correct. So if you have a semicircular loop, but is a closed loop like this, and the magnetic field is perpendicular, the answer is 0. Correct. But if you have a loop like this, and I will change the diagram a bit. Tell me what is the difference? ये क्लोज लूप नहीं है. इसमें जो वायर है इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी उल्टी कर दी मैंने डायरेक्शन. मे भी करंट आया कहीं से, स्प्लिट हो गया और यहां ऐड होके चला गया. मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मान लो इट इज क्रॉस हेयर. Okay. If it's a closed loop, the answer on the net force on the field is 0. However, if it is a loop like this, which is not closed, the total forces will get added. Okay. डबल हो जाएगी, मतलब 4IBR बन जाएगी फोर्स. ठीक है. So in the previous case, also you did RD theta. What saved you was that the direction of B was पैरेलल टू द लूप. ये पैरेलल था. अब मैंने अगले क्वेश्चन के अंदर ये कर दिया. दैट इज द ओनली डिफरेंस. इसमें द होल अपर पार्ट एक्सपीरियंस 2IBR एंड द लोअर ऑल्सो एक्सपीरियंस इन रिवर्स डायरेक्शन. एंड अगेन लूप, इसमें करंट पूरा जा रहा था, लूप था. तो देखो ये भी लूप है. अगर लूप होता तो नेट फोर्स देखो कितनी आती है, 0. ये सेमी सर्कुलर लूप था, लेकिन करंट भी करंट प्रॉपर लूप की तरह बिहेव कर रहा था. देखो ये लूप है. हाँ, यस ये सर. लूप है ना, इसमें भी 0. बट अगर करंट लूप में ना होके, इफ द करंट इज नॉट अ लूप, then the answer is not 0. Both the forces get added. So anytime you see a loop inside where the current is actually in a loop, the answer you know is what? Calculation करने की जरूरत नहीं है. It's a loop. All the forces will get cancelled. ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी फोर्स, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अलग है. यस सर. दोनों का L क्रॉस भी उल्टा हो जाएगा हाँ. और
इन दोनों का भी एल क्रॉस भी उल्टा हो जाएगा फोर्स। करेक्ट। आंसर 0। ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि, लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि दिस इज समथिंग लाइक दिस, नाउ दिस इज नॉट अ लूप, current is not हम्म। moving in a closed circuit, यस सर। you will have to add the forces। ये दोनों में देखो, खासकर ये दोनों तो फिर भी कैंसिल हो रही हैं, देखो हम्म। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है, ये वाला और ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन इन दोनों में देखो सेम डायरेक्शन, करेक्ट। बिल्कुल सिमिलर टू दिस हम्म। लूप, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अंडरस्टूड। We'll do bit of practice when we go to the talk part of it, but hopefully this has given you a bit of insight, थोड़ी सी हाँ। इंसाइट आ गई होगी कि यार कुछ क्लोज्ड लूप से बहुत फर्क पड़ता है। इफ इट्स अ क्लोज्ड लूप करंट, द नेट फोर्स इज 0। इफ इट इज नॉट अ क्लोज्ड लूप करंट, द नेट फोर्स इज नॉट 0। हम्म। Even if you get this insight, you can solve many questions with the help of this। ठीक है सर। ठीक है, so I'll see if you can do some from the book। Now go back and see for yourself, are you able to understand it in a better manner or not, can you do the questions or not। ओके सर। ठीक है, so force on a circular conductor has two scenarios। One is when the conductor is carrying a closed loop current, and the second is when it is not carrying the closed loop current। ठीक है, ठीक है। चलो let's meet। I will let you know because my son is leaving for US ओके। today, so I'll let you know the time। और क्योंकि एयरपोर्ट में 3-4 घंटे पहले जाना पड़ता है यार, हाँ वो तो है। इज गोइंग टू इंडियाना। हम्म।